The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 21st, 2017 at Balaram Dish. The talk was given with Hindi translation. Saraswati Devi, Auradhani Pracharine, Nirvisesa, Sanyavadi, Pasatya Dasatarine. Namaste Saraswati Devi, Auradhani Pracharine, Nirvisesa, Sanyavadi, Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhagavati Vatsala Anulangaya Tegirim Yatkivata Mahanmante Sri Narayana Paramananda Madhava Sri Chaitanya Swami Hari Om Tat Sat. So I think will be repeated by Shyam Madhusudan Das. What I speak will be repeated by Shyam Madhusudan Das. So you can understand it clearly. So you can understand it clearly. Will there be any other language? Will there be any other language? Yeah, we can. Hindi. Oh, translate it. कौन अनुवाद करेंगे? कौन अनुवाद करेंगे हिंदी में? Okay. We're very happy to be with you tonight. So we're very happy to be with you tonight. हम आपके साथ यहाँ पर रहने में बहुत खुश हुए हैं आज रात. That the first program is held here is something historical. That the first program is held here is something historical. Hari Bol. ये ऐतिहासिक है कि हम पर जो है सबसे पहला का प्रोग्राम जो है हुआ. That shows that you have bhakti. That shows that you have bhakti. इससे ये साबित होता है आप में कितने भक्ति है. We're sorry that there's not enough room. We're sorry that there's not enough room. हमें खेद है कि यहाँ पर इतने सारे जगह नहीं है, इतने कमरे नहीं हैं. You have to squeeze in. You have to squeeze in. तो आप लोग जो है जगड़ बुगड़ के बैठना पड़ता है. We were discussing about the pastimes of Lord Chaitanya.
We were discussing about the pastimes of Lord Chaitanya. हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में चर्चा कर रहा था। Krishna was told by Rukmini Krishna was told by Rukmini रुक्मिणी देवी ने कृष्ण भगवान से कहा that you're Bhagavan. that you are Bhagavan. कि आप स्वयं भगवान हैं। You know what Brahma is doing in Satyaloka. You know what Brahma is doing in Satyaloka. आपको ये पता है कि ब्रह्मा जी सत्यलोक में क्या कर रहे हैं? You know what Shiva is doing in Kailash. You know what Shiva is doing in Kailash. आपको ये भी पता है कि शिवा जो है कैलाश में क्या कर रहे हैं? You know everything. You know everything. आपको सब कुछ पता है, But it seems one thing you don't know. But it seems there's one thing you don't know. किंतु ऐसा लगता है कि आपको एक चीज के बारे में पता नहीं है। I know. I know. मुझे पता है, Radharani knows. Radharani knows. राधा रानी को भी पता है, But you don't know. But you don't know. किंतु आपको नहीं पता। What? What? क्या है? No one had ever told Krishna there was something that he didn't know. No one had ever told Krishna that there is something that he does not know. कभी किसी ने कृष्ण से ये नहीं कहा कि वे आपको कुछ चीज का पता नहीं है। So then, Rukmini revealed. So then Rukmini revealed. उसके बाद रुक्मिणी देवी ने बताया, You don't know how much your devotees love you. You don't know how much your devotees love you. आपको ये नहीं पता है कि आपकी भक्त ने आपके साथ कितने प्रेम करते हैं And in what way they love you. And in what way they love you. और किस किस तरीके से वो आपसे प्रेम करते हैं। So Krishna was surprised to hear this. Krishna was surprised to hear this. कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित हुए ये सुनकर। हुंडई के बारे में नहीं। I said Lord Krishna surprised, not hearing about Hyundai before that statement. And the same day, Narada Muni was disturbed. That same day, Narad Muni was disturbed. उसी दिन श्री नारद मुनि भी बहुत चिंतित थे। He wondered He wondered उन्हें ये चाहिए था that if Krishna is leaving the universe, if Krishna is leaving the universe यदि कृष्ण भगवान इस अंड को छोड़ के चले and Kali Yuga begins, and Kali Yuga begins, और कलयुग का आरंभ हो जाए, how will the conditioned souls get delivered? how will the conditioned souls get delivered? ये बद्ध जीवन किस तरह उपाय पाएंगे बचने का? So Krishna said, So Krishna said, I will come again in I Kali will, Yuga. I will come again in Kali Yuga. कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं फिर से इस कलयुग के समय पे आऊंगा, But I will come as a devotee, But I will come as a devotee. किंतु मैं ये भक्त बन करके आऊंगा and I'll understand how my devotee loves me. And I will understand how my devotee loves me. इस तरह मैं समझूंगा कि मेरे भक्त मुझसे कितने प्रेम करते हैं, And I will also distribute the Yuga Dharma. And I will also distribute the Yuga Dharma. साथ साथ मैं इस युग धर्म का भी क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। I didn't get the word for distribute. What do you call for distribute in Hindi? प्रचार करूंगा, इस युग धर्म का भी प्रचार करूंगा। इसीलिए बोला मैं ना करूंगा। Lord Chaitanya is that coming of Krishna. So Lord Chaitanya is that coming of Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भगवान का यहाँ आने का मार्ग है। As a devotee, As a devotee, एक भक्त होने के साथ साथ, and he preached the glories
of the Harinam. and he preached the glories of the Harinam. ये भक्त का हरिनाम का प्रचार भी करते थे. As a young boy, he was very naughty, like Krishna. Like Krishna, So as a young boy, he was very naughty like Krishna. Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान की तरह अपने बचपन में बड़े शरारती थे. And he was, as a Pandit, he was the greatest Pandit. As a Pandit, he was the greatest Pandit. और वो सबसे महान पंडित भी थे. As a Grihastha, he was the ideal Grihastha. As a Grihastha, he was the ideal Grihastha. जो गृहस्थ आश्रम में भी वो सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ था. And when he was a devotee, And when he was a devotee, he was a super devotee. he was a super devotee. और जो भक्त था तो सबसे महत्वपूर्ण भक्त भी थे. He was giving out really Krishna prema. He was giving out purely Krishna Prem. Really. वो Really Krishna Prem. शुद्ध कृष्ण प्रेम का सबके विनियोग करता था. And as a sannyasi, As a sannyasi, he was very renounced, very peaceful. he was very renounced, very peaceful. और सन्यासी जैसे बने थे तो वो बड़े शांत थे और पक्का सन्यासी का पालन करते थे. But he was Rasa Shekhar. But he was Rasa Shekhar. रासशेखर. Yes. साथ वो रासशेखर भी थे. Rasa Shekhar means he tasted all the rasas. Rasa Shekhar means he tasted all the rasas. रसाशेखर का मतलब है कि वो सब रस का जो है आस्वादन किया था. हमें वैसे बांग्ला जाने আমি বেশি বাংলা জানি কিন্তু कुछ कुछ हिंदी जानता हो. কিন্তু कुछ हिंदी जानता हूँ. लेकिन मेरा बांग्ला एग्जिट हो गया. लेकिन मेरा बांग्ला एग्जिट हो गया. So when Lord Chaitanya was a child, So when Lord Chaitanya was a child, जब चैतन्य महाप्रभु के बचपन में he ran after school with Jagadananda and Gadadhar. he ran after school with the Jagadananda and Gadadhar. गदाधर और जगदानंद के साथ स्कूल की छुट्टी होते ही भागते थे. Not ball, just he ran. रैन भागते भागा. रैन मीन्स भागी दौड़ना. Oh. If I said, दौड़ रहे थे. if I said ball, I said भाग. and he saw a parrot. And he saw a parrot. वो एक तोता को देखा था. So he said, "Oh, you're not different from Sukadeva Goswami." He said, "Oh, you're not different from Shukdev Goswami. वो आप सुखदेव गोस्वामी से भिन्न नहीं है." Sukadeva had glorified Radha and Krishna in the Bhagavatam. And Shukdev had glorified Radha and Krishna in the Bhagavatam. सुखदेव राधा कृष्ण का वर्णन करते थे श्रीमद् भागवतम में. So please glorify Radha and Krishna. So please glorify Radha and Krishna. तो राधा कृष्ण का गुण गाओ. That's glorified. गुण गाओ. So the parrot began to chant. So the parrot began to chant. करने दो. He wants to do. करो ना. So
एंड तोते ने जो है चैंट करना शुरू किया। जब जब फिर इंग्लिश बोलता है यार क्या फिर तोता ने जब करना शुरू किया। Gora, Gora, गौरा 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 Gora, 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 Who can be a better parrot? Now, who can be a better parrot? तो इसमें सबसे अच्छा तोता कौन बन सकता है? The judge. You be the judge. Amongst the ladies, who's the best parrot and amongst the men? महिलाओं के बीच में सबसे अच्छा तोता कौन है वो अभी पता करेंगे। So the best parrot amongst the women, the best parrot amongst the men. और मर्दों के बीच में भी कौन सबसे अच्छा तोता बनेगा अभी देखा जाएगा। Gora, 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 पंख जैसे बनाओ, हाथ को ऊपर नहीं, साइड में। Gora, 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 Gora. What's this? Can't do it like this. Parrot does not go like that. अपना हाथ ऊपर नहीं करना, ऐसा पंख जैसा करना साइड में। Lord Chaitanya said, no, no, no. Lord Chaitanya said, no, no, no. चैतन्य महाप्रभु का नहीं नहीं नहीं। I didn't want to hear this. I did not want to hear this. मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। I am a devotee of Radha and Krishna. I'm a devotee of Radha and Krishna. मैं राधा कृष्ण का भक्त हूँ। I want to hear the glories of Radha and Krishna. I want to hear the glories of Radha and Krishna. मैं राधा कृष्ण का गुण सुनना चाहता हूँ। But the parrot said, since time immemorial, I've been doing this bhajan. But the parrot said, since time immemorial, I've been doing this bhajan. तो ये तोता ने कहा कि मैं आदि समय से लेकर के यही भजन गाते आया हूँ। So I only know how to do this bhajan. So I only know how to do this bhajan. तो मुझे केवल यही एक भजन करना आता है। Gora, 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 Gora. One more chance. One more chance. One more chance. One more chance. एक और मौका मिलेगा। Lord Chaitanya said, this place, Navadip, is not different from Vrindavan. Lord Chaitanya said this place, Navadvip, is non-different from Vrindavan. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जगह जो नवद्वीप है ये वृंदावन से भिन्न नहीं है। So this place, you should glorify Radha and Krishna. So in this place you should glorify Radha and Krishna. इसलिए इस जगह पे आप राधा कृष्ण का ही गुण गाएंगे। The parrot said, The parrot said तोता ने कहा that for me, yes, this place is not different from Vrindavan. that for me, yes, this place is not different from Vrindavan. हाँ मेरे लिए भी ये जगह वृंदावन से भिन्न नहीं है। And you are Shyam Sundar. And you are Shyam Sundar. और आप श्याम सुंदर हैं। And Radha is Gadadhar. And Radha is Gadadhar. और राधा जो है वो गदाधर हैं। So I'll chant in my way, you chant in your way. So I'll chant in my way, and you chant in your way. मैं अपनी तरीका से जप करता हूँ, आप अपनी तरीका से करें। I will chant
Gora Gora. Gora Gora. Gora Gora. So who won? So who won? They are all कौन जीता प्रभु से सब पूछ जीत रहे। गया, सब जीत गया गुरु भाई ऑल So, यस which lady? Which lady? महिला में कौन जीता गुरु भाई all are okay, they are all good cows. I didn't see anybody fly out there. I didn't see anybody fly up in the air. मैंने किसी को हवा में उड़ता हुआ तो नहीं देखा। Lord Chaitanya and Gadadhar, Dhananda Pandit, So Lord Chaitanya, Gadadhar and Jagadananda Pandit, श्री कृष्ण चैतन्य और गदाधर पंडित और जगदानंद they ran from that place. they ran from their place. उस जगह से क्या करो भाग निकले दौड़े। Lord Chaitanya was holding his ears. Lord Chaitanya was holding his ears. चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों कान बंद कर दिए। Lord Chaitanya, he had so many pastimes. Lord Chaitanya, he had so many pastimes. श्री चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं। When he was Nimai Pandit, When he was Nimai Pandit, जब वो निमाय पंडित थे he was the topmost Pandit. he was the topmost Pandit. वो सबसे अति उत्तम पंडित भी थे। And all the people would want to do some seva. And all the people would want to do some seva. और सब जन जो है कुछ न कुछ सेवा में लगा रहना चाहते थे। Garland maker would give a garland to Lord Chaitanya. The garland maker would give a garland to Lord Chaitanya. जो फूल मालाएं बनाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के लिए मालाएं बना के दिया। And the Lord Chaitanya, he said, I go for Brahman. I don't have any money right now. And Lord Chaitanya would say, I'm a poor Brahmin, I don't have any money right now. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। But the flower garland maker said, you don't have to pay me. But the flower garland maker said, oh, you don't have to pay me. तो माला बनाने वालों ने बोला कि आपको कोई पेमेंट आपको कोई पैसा नहीं देना है। Like this, some offered a fine cloth, some offered some other gifts. Like this, someone offered him fine cloth, someone offered him fine gifts. तो इस तरह किसी ने नए कपड़े का दान दिया और किसी वस्तुओं का दान दिए। And then he came out to an astrologer. And then he came up to an astrologer. उसके बाद एक ज्योतिष के पास आए थे। He had the name of Sarvagya. He had the name of Sarvagya. उनका नाम था सर्वज्ञ। And Lord Chaitanya said, oh, tell me what I was in my previous life.
So then Lord Chaitanya said, "Tell me what I was in my previous life." तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अब ये बताइए कि मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था। So he looked at his Lord Chaitanya's hand. So he looked at Lord Chaitanya's hand. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का हाथ देखा। He went into trance. He went into trance. वो बिल्कुल what do you call for trance? समाधि में चले गए। And he saw Ramchandra green. And he saw Ramchandra green. तो उन्होंने हरा कलर का रामचंद्र जी को देखा। He saw Shyam Sundar blue color. He saw Shamsundar blue color. नील रंग का श्याम सुंदर को देखा। Like this he saw different avatars. Like this, he saw different avatars. तो इस तरह वो कई अवतारें देखा। Lord Chaitanya was asking, well, what did you see? What was I? Lord Chaitanya was asking, "Well, what did you see? What was I?" तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आपने क्या देखा? We come back later. Then we come back later. वो बाद में आएंगे। I'll tell you that. I'll tell you then. उस समय में बताऊंगा। And he ran into his room. And he ran into his room. फिर वो अपने कमरे के अंदर दौड़ चले। Like this, Lord Chaitanya was enjoying his pastimes. Like this, Lord Chaitanya was enjoying his pastime. इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में आनंदित थे। And like this, he had so many pastimes. And like this, he had so many pastimes. इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का अनेक लीलाएं हैं। Then after taking initiation in Gaya, Then after taking initiation in Gaya, गया में अपने दीक्षा लेने के उपरांत he became a devotee. he became a devotee. वे भक्त बने। And then he started the Sankirtan movement. Then he started the Sankirtan movement. ये फिर वो संकीर्तन का आरंभ किया। So Srila Prabhupada, he took that Sankirtan movement to the West. So Srila Prabhupada took that Sankirtan movement to the West. इस संकीर्तन मूवमेंट को क्या बोलते हैं? आंदोलन। सो ये संकीर्तन आंदोलन को श्रील प्रभुपाद जी ने पश्चिम दिशा में लेके गए। And Lord Chaitanya reached in India, in the Indian subcontinent. Lord Chaitanya reached in the Indian subcontinent. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इंडिया का सब भाग में आए और प्रचार किया। गुरु महाराज हिंदी में बोले यार। Bhagavan, he preached in the distant places where Lord Chaitanya didn't go. He preached in the different places where Lord Chaitanya did not go. बलराम प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ने उन अन्य जगह में जाकर के प्रचार किया जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंचे थे। So when he was in Los Angeles, So when he was in Los Angeles, जब श्री प्रभुपाद लॉस एंजल्स में थे, the deities told him he should also preach in India. the deities told him that you should also preach in India. तो विग्रह ने बताया कि आप हिंदुस्तान में भी प्रचार करना है। Otherwise, he was just preaching in the West. Otherwise, he was just preaching in the West. अन्यथा वे केवल पश्चिम दिशा में ही प्रचार कर रहे थे। Now in India, we have about 75 to 100 branches. Now in India, we have about 75 to 100 branches. अभी हिंदुस्तान में केवल 75 से 100 से अधिक आलय हैं। In Bangladesh, you have about 30. In Bangladesh, you have about 30. बांग्लादेश में लगभग 30 हैं। In Nepal, about 12 centers. In Nepal, about 12 centers. नेपाल में 12 है।
about 4 centers in Sri Lanka. and about 4 centers in Sri Lanka. और लगभग 4 हैं श्रीलंका में. Like this, we have, but Prabhupada asked me to preach, especially in the Indian subcontinent, but he also asked me to travel and preach. Prabhupada asked me to preach especially in the Indian subcontinent, but he also asked me to travel and preach. श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के सब भाग में मैं प्रचार करूं और साथ साथ हर जगह में भी जाके प्रचार करूं. So, we're very happy to be here. So we're very happy to be here. तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके. I see this as an extension of the South Asian Andolan. I see this as an extension of the South Asian Andolan. यहाँ पर दक्षिण एशिया का एक आंदोलन का ब्रांच मानता हूँ मैं इसको. So, this healing for our life is meant to understand our relationship with Lord Krishna. Human form of life is meant for us to understand our relationship with Krishna. ये मनुष्य जन्म का आदि मुख्य कारण यह है कि हम कृष्ण भगवान के साथ किस तरह संबंधित हुए ये जानकारी हासिल करना. So here in the center, So here in the center, तो यहाँ पर इसका मध्य में we want to reestablish our lost relationship with Krishna. we want to re-establish our lost relationship with Krishna. जिस संबंध को हम भूल चुके हैं उसे दोबारा दोहराने के लिए सेवा में लगे रहेंगे. Can be of any religion, any background. One can be of any religion, any background. वो किसी भी धर्म को किसी भी मार्ग को पालन करने वाला हो. This is a postgraduate study. This is a postgraduate study. I don't know. ये पोस्ट ग्रेजुएट का स्टडी उनका होगा. I don't know what is postgraduate. Anybody knows what is postgraduate? स्नातक. ये कोई भी मार्ग में किसी भी धर्म को पालन करने वाला क्यों ना हो उनका यही स्नातक होगा. स्नातक बोल रहा है. पोस्ट ग्रेजुएट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स गुरुकुल. We don't convert anyone. हम किसी को बदलते नहीं हैं. Establish that one get practice their own faith for serious things. We establish that one can practice their own faith more seriously. हम यही कहेंगे जिनको जिस मार्ग में उनका वो है उसको what do you call विश्वास है उसे और भी मजबूत करते हैं. So, each one of us want to be very serious and chant the holy names, read the Srimad Bhagavatam. We want to be very serious, chant the holy names, and read Srimad Bhagavatam. तो हम इसमें बहुत what do you call for seriousness गंभीरता के साथ श्रीमद् भागवत का सर्च करेंगे और भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे. When I flew here, then the airline said, "Thank you for choosing our airline." The flight on which we flew here, they said, "Thank you for choosing our airline." तो जब हम विमान में गए थे तो उस विमान कंपनी का उन्होंने कहा कि हमारे विमान को आपने चूज किया इसके लिए धन्यवाद. हरि बोल. हरे कृष्णा. If there are two choices, So there are two choices.
आपके पास दो मार्ग है. One choice is to choose the path of karma. One choice is to choose the path of karma. एक आपका पसंद मार्ग होगा जो कर्म का अपना बनाना, अपना मार्ग बनाना. All your satya good activities, you get credit. For all your sattva good activities, you get credit. जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने अच्छे फल पाएंगे. All your rajasic and tamasic activities, you get some negative karma. For all your rajasic and tamasic activities, you get some negative karma. और जितने रजसिक और तमसिक कार्य करेंगे उसका भी उल्टा फल पाएंगे. And that's one airline. उसको हम एक विमान मानेंगे. Other airline is Lord Chaitanya's Mercy Airline. The other airline is Lord Chaitanya's Mercy Airline. और दूसरे विमान हमारा होगा श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा. Like chanting the holy names. By chanting the holy names, ये पुनित नाम का जप करने का जरिए You can go back to the spiritual world. you can go back to the spiritual world. आध्यात्मिक तल तक आप पहुंच सकते हैं. By the other airline, the Karma airline, For the other airline, the Karma airline, वो दूसरा विमान जो कर्मा विमान है you only go to Swarga or to Naraka. so it says you go to Swarga or नरक. Naraka. उससे आप स्वर्ग या नरक तक ही जा सकते हैं. You can't go to the spiritual world. You can't go to the spiritual world. आप आध्यात्मिक तल तक पहुंच नहीं सकते. So, who would like to take the Karma airline? So who would like to take the Karma airline? कौन इस कर्मा विमान को अपनाना चाहेंगे? Raise your hand. Come on. हाथ ऊपर उठाए जो कर्मा का अपनाना चाहेंगे. You have put me down. I said all are cross, good cross. And who wants the mercy of Lord Chaitanya? Okay, Okay. ठीक है. so you're all eligible for Lord Chaitanya's mercy. So you're all eligible for Lord Chaitanya's mercy. आप सब चैतन्य महाप्रभु का कृपा का योग्य हैं. So I'm planning to be here in Balaram Desh. So I'm planning to be here in Balram Desh. तो मैं ये बलराम देश में मैं रुकना चाहूँगा. Almost a week. For almost a week. लगभग एक हफ्ता यहाँ पर रहूँगा. But this is the second day. But this is the second day. किंतु ये दूसरा दिन है. Well, I think the special public program. Tomorrow I think there's the special public program. कल पब्लिक जनता का जो आयोजन कल है. So I'll let you all attend that and meeting and enjoy. आप लोग सब उसमें शामिल होकर के आनंद लें. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.